episode of my mini series. If you haven't seen the first, please check it out. That was an introductory video what we are going to talk about in the series. Today's video is on the basics of nutrition, like the common terms that float around the fitness and health industry, just so that you get the hang of it. I will be telling you all of this in English and Hindi for better understanding and breaking down these terms for everybody's convenience. So let's get started. So the first topic is, what are calories? What are calories? We hear this term so often. हर जगह सब लोग बात करते हैं कैलोरीज कम खाओ, ज़्यादा खाओ, इसमें कितनी कैलोरीज हैं. This term has become so commonly spoken about in the last few years. But what does it really mean? Everything requires energy to move. Just from moving to here, from here to here, going here needs energy, right? Without energy, nothing in this world can move. Okay. And secondly, there is a unit of measure for every single thing. For the energy, like in a light bulb, there electricity comes in, it changes to energy in terms of watts and power and all of those things. But there's a unit of measure for every single thing. So, on those terms, what is a calorie? Now, just like what I showed you going from here to here, if we're talking about just a human body, if I'm like moving my hands like this, or speaking, using my mouth to speak, it needs certain energy to speak, to use my body, to like move my hands like this, do this, everything. It needs a certain energy. Okay. Where does this energy come from and what is it? This energy is used in the form of calories. Calories is the unit of measure here. Okay. I just feel that don't take calories in the negative connotation that it has associated itself with over the internet. Low calorie is just become this amazing term that you should be using all the time. No, it's okay. Like there are high calorie foods or there are low calorie foods. They're just numbers, and it depends on a lot of other things. Calorie itself is not a bad word. It's just a word. It's just energy that your body is using. That's it. Okay, so that's calories for you. Now, what happens inside our body? Every single thing I consume has a certain calorie amount, has something in it. कुछ है उसमें. It's not हवा से नहीं बना हुआ, right? So कुछ होता है हर एक छोटी सी item में. When I consume that item gets breaking down, like with my saliva, with my intestines, stomach, all the acids and the juices inside, break down that food into its smallest molecule. Okay. This molecule, the smallest form of these foods, then gets passed to the different organs for however they want to use it. Okay. So ये सब कुछ जो भी हम खाते हैं, जितनी भी कैलोरीज खाते हैं, सब ब्रेक डाउन हो जाती हैं बॉडी के अंदर. अगर आप राइस की इडली खा रहे हो या फिर आप स्टीम्ड राइस खा रहे हो, दे आर बोथ राइस. They are both made of the same things. Your body doesn't know it's idli or it's rice. So all those things are the myths that we'll talk about in the myths video, that one thing is superior and one thing is inferior. That's not the case when our body breaks it down. So we'll talk about those things later. The next topic is BMR. What is BMR? इसको simple terms में समझते हैं. जैसे कि मैंने अभी बोला कि मैं ऐसे हाथ हिलाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो उसमें एक एनर्जी यूज होती है, राइट? उसी तरह से from the day we were born, or even before that when we were conceived, since then our body is alive, it is in movement. कुछ ना कुछ हो रहा है, right? हमारी बॉडी में हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, लिवर कुछ ना कुछ कर रहा है, लंग्स कर रहे हैं, सब चीज़ों का अपना अपना रोल होता है. एंड वो सब ऑर्गन्स
अपना अपना काम करते हैं हर रोज़ विदाउट फेल, यू नो, एक सेकेंड भी कोई ऑर्गन रुकता नहीं है. Everything has to work according to its functionality all the time, even when we are sleeping. When we are sleeping, our body is still, you know, pumping blood, metabolizing our food, doing so many things. When we wake up, as simple as our brain getting awake from into consciousness, and then our eyes opening up, and then when we sit, we get up from the bed, you know, all of these things use energy. ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, यू नो, कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है जो अपनी बॉडी उसको देती है इस्तेमाल करने के लिए. ये सब एनर्जी खाने से आती है. हम जो खाते हैं वहीं से ये एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ करके अपने बेसिक काम करती है. अभी ये सब जो बेसिक काम है ये फिक्स्ड है, राइट? हार्ट को ब्लड पंप करना ही है, पंप नॉट प्लम्प, पंप करना ही है, नो मैटर वॉट, राइट? आपकी लंग्स को एयर लेनी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है, ये सब करना ही करना है, राइट? देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. सो ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज आर अ बेस level which has to happen every single day, every single minute that you're breathing alive. Just to keep you alive, your body needs this basic level of energy, okay? So this comprises of your base metabolic rate, which is a certain number of calories that your body absolutely needs to keep you alive. आपको जिंदा रखने के लिए आपकी बॉडी को एक बेसिक कैलोरीज चाहिए, खाना चाहिए, एक फ्यूल चाहिए जिससे आप चलते रहेंगे, आप जिंदा रहेंगे, और इससे कम हम कभी भी नहीं खाएंगे. ऑलवेज रिमेंबर दैट, नेवर ईट बिलो योर BMR, ओके? नेवर. That's extremely harmful for your body, for your future, because उससे लॉन्ग टर्म डैमेज हो जाता है हमारी बॉडी को. हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म ही खराब हो जाती है अगर हम उससे कम खाएंगे, ठीक है? मतलब अगर आपकी बॉडी का बेस रेट 1000 कैलोरीज है और अगर आप 800 खाते हैं एक दिन, कोई बात नहीं, 2 दिन कोई बात नहीं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 साल, आप कई सालों से कम खा रहे हैं, आपकी बॉडी को बहुत नुकसान हो रहा है. आपको आइडिया भी नहीं है आपकी बॉडी कितने नुकसान में है. एंड यू नो, ये करने से भी आपकी बॉडी फैट स्टोर करेगी, बिकॉज उसको लगेगा कि अरे यार, ये तो मुझे खाना ही नहीं मिलता है. अगर कल को इतना भी ना मिले, अगर अभी तो 800 दे रहा है ये मुझे, अगर कल 800 भी नहीं दे तो आपकी बॉडी एक रिजर्वोयर बनाने लग जाती है. सो वी वोंट गेट इनटू दैट, इट्स अ वेरी डीप टॉपिक, बट नेवर ईट बिलो योर BMR. Yeah, so that's one thing. Your BMR is over here. It is say 1000, 2000, it can be anything based on your body, okay? Everybody's BMR would be different based on lot of factors, okay? But it will be different for everyone. There you go. Now the next is TEE, which is your total energy expenditure or your total daily energy expenditure. यहाँ तक तो थे जहाँ पे सब सिर्फ बेसिक, यू नो, अलाइव रहने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है? वो हो गया. अब आप दिन में ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आप चलते फिरते हैं, खाना बनाते हैं, घर के काम करते हैं, शायद 1 घंटा एक्सरसाइज भी करते हैं. ये सब करने में भी कुछ एनर्जी लगती है. मे बी 500 मान लेते हैं, एक पूरे दिन में 500 कैलोरीज आप इसमें बर्न कर रहे हैं. तो आपका यहाँ 1000 थे, अब आप आ गए 1500 पे. सो नाउ दिस इज योर टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर. यू आर हियर विथ जस्ट बी अलाइव. Now, because of, you know, you do something, you get up here, okay? So these are 2 terms which are really important, and I've tried to keep it as short as possible. एक simple example से correlate करते हैं, okay? Money, my favorite example. So, you know, let's say that you earn $2000 a month, okay? For example, योर बेसिक एक्सपेंसेस ऑफ द मंथ, यू नो, आपके दिन के खर्चे जैसे कि आपका घर का रेंट, आपकी गाड़ी का EMI, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपके बच्चों की स्कूल की फीस, एनीथिंग, यू नो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मिला के ये कुछ खर्चे हैं जो आपको करने ही करने हैं एवरी मंथ. यू कांट एस्केप फ्रॉम देम. अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अगर आप जैसे अभी क्वारंटीन में पूरा दिन घर पे हैं, आप कुछ खा भी नहीं रहे, लेकिन अगर आपके एक बेसिक एक लेवल के खर्चे होंगे, जो आप बेसिक दाल चावल कुछ भी खरीदते हैं, एक लेवल का खर्चा तो होगा ही एवरी मंथ.
ठीक है, 2000 इनकम है, मान लीजिए कि आप हर महीने $1000 तो खर्चते ही हैं, ठीक है, वो एक आपकी सैलरी का एक्सपेंस है। अब जो बाकी 1000 बचे वो कहाँ जाते हैं, वो आप सेविंग्स कर सकते हैं, राइट, वो आपके सेविंग्स में एड अप होते जाएंगे, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग, ग्रेट। लेकिन अगर किसी मंथ आप कोई ट्रिप पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, या आपको कोई पार्टी थ्रो करनी है, आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो गया, एंड लेट्स से इस मंथ आपका $3000 एक्सपेंस हो गया टोटल, सो नाउ यू आर इन एक्सेस ऑफ 1000 जो आपके पास अभी है ही नहीं, राइट, आपके इस मंथ आए ही नहीं है आपकी इनकम, तो आप कहाँ से खर्च करेंगे, वो आपके सेविंग्स में से आप स्पेंड कर सकते हैं, राइट, यू कैन टेक इट आउट ऑफ योर सेविंग्स एंड स्पेंड दोज एक्स्ट्रा $1000, सिंपल, okay, so the same concept can be applied to your body and what it needs, right? Now your base rate was 1000, we have already done this, right, fast, 1000, and your expenditure is 1500, okay, let's say you eat in a day 2000, okay, so your 1500 will be completely consumed, okay, but that excess 500, where will that go? Your body will store it as fat inside your body, in your these flabby arms or your love handles or something, but it will store it. Where it stores, it's not in your hands, you can't decide that where it's going to store it, right? ऐसा नहीं है कि ये वाली चीज़ खाने से सिर्फ यहीं कहीं पे फैट जाता, ऐसा नहीं होता, योर बॉडी हैज़ इट्स ओन ब्रेन, इट डिसाइड्स ऑन इट्स ओन वेयर टू स्टोर इट, ओके, सो इट स्टोर्स इट, it keeps storing it every day if you keep eating excess, right? Now BMR was 1000, TE was 1500, if you eat 1500 only, everything is consumed, you don't gain, you don't lose, nothing, this is your maintenance level, right? You can maintain your current weight or your current state of your body at this weight, okay, you can keep on like living like this and it will be good, there is no loss, no gain, okay, but if you start eating 1400 every single day, 1500 is your expenditure, 1400 if you start consuming, this gives us a deficit of 100 calories, right? What will happen? Where will your body get 100 calories from to use in the form of your exercise or anything that you're doing in excess? It will use it from the stored fats. Again, as I mentioned, you cannot decide from where it will take the fat, right? You cannot decide where to store the fat, you cannot decide where to take out the fat from, your body has its own brain, spot reduction does not exist. So yeah, your body will start using the excess fats stored in various places of your body slowly, okay, so abhi 100 ka hi deficit hua hai, it will start taking that 100 from various places. Now if you keep up with this 100 deficit every single day for like a long time, that will add up, you will start losing visible weight from your body, okay, they say on an average 3500 calories equals to 1 pound of fat, 1 lbs, so that is around half kg, 1.45, like half kg approximately, so that means 100 every day, 35 days you can amount to an lb of fat, good, right? So you can adjust your deficit according to what you can sustain. Don't think ऐसे तो मैं रोज 1000 खाने लग जाऊं, 500 का डेफिसिट 7 दिन में ही मेरा हो जाएगा, but is it sustainable? Again, if after the 7 days again you can eat, if you start increasing again the cycle will continue, so do something which is sustainable, that's why BMR से कम तो जाना ही नहीं है, we have established that, okay, ये समझ गए हैं सब लोग, but you can create a small deficit or you can create a big deficit. Again, this is a personal concept, personal preference, but how low will you go? You can either go till 1000, keep eating 1000, मतलब बहुत कम कैलोरीज होती है 1000, मतलब मिजरेबल स्टेट होती है उतना कम खाना, उतने में खाते रहो, वेट लॉस होता रहेगा, बट विल यू बी हैप्पी, विल यू फील फुल, विल यू फील सेटिस्फाइड? मे बी नॉट. दैट्स वाई rather than keep on decreasing this to the last level, अब इससे कम कहाँ जाओगे, right? You can't. Increase your total expenditure.
the deficit will grow, right? Right now it was here, you were eating this much, you kept on going, now there's no place to go beyond this, right? It's stuck. So increase this. You're creating a deficit. You can even then eat more than what you were eating before, still be in a deficit. How amazing is that? So yes, that's where exercise plays a major role, but it still comes down to creating a calorie deficit. Macros and micros. So guys, like I said, every food has something in it, right? मतलब ऐसे एक बोल में खाना है, कुछ ना कुछ है, right? हवा नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी हवा होगी, बट पूरी हवा नहीं है. There is all percentage of things, अगर ये 100% की कोई आइटम है, उसके अंदर 2% कुछ होगा, 5%, everything. So every food item has a variety of nutrients, okay? These nutrients are classified into macronutrients or micronutrients. Now, macronutrients are the main nutrients from which the calories come from which energy comes from, which comprises the food in a majority. Okay, micronutrients, as the name says, are micro. They don't really have calories. There's no food like which can have just micronutrients. Like, I don't think that exists, but okay, maybe it does. You can tell me. So what are micronutrients? They are like calcium, iron, vitamins, minerals, all of the vitamin K, vitamin A, folate, iron, magnesium, potassium, all of these. Okay. Macronutrients, on the other hand, are carbohydrates, proteins, and fats. These are the main only macronutrients. Okay. Now, just like there are suggestions by RDA and health experts on how many nutrients you should have, micronutrients, like they take your blood and they tell you that B12 is low, calcium is low, vitamin D is low, all of those things. Similarly, protein, carbs, and fats have their levels that you should eat. Having said that, there is no concept of like good or bad. All three are good, all three are essential for your body. हमारी पूरी body में हर चीज़ की अपनी importance है. Remember, we studied in school, balanced diet is the most important diet, right? हर चीज़ की अपनी जगह है, हर चीज़ की अपनी ही ज़रूरत है body में. So for some time, sure, you can eliminate some, जैसे लोग carbs बंद कर देते हैं, ये सब करते हैं. It's okay for some time, but for lifelong you cannot do that. ज़रूरत है body को हर चीज़ की. Okay, so we have all we know the basic concepts. Carbohydrates are the ones which give us the main energy in our body. Okay, they convert into the simplest form, which is glucose, and that gives energy, the main energy in our body. Okay, 1 carbohydrate equals to 4 calories. 1 gram of carbohydrates converts to 4 calories. Protein, my favorite. No, fats are my favorite. Okay, both. Protein is the building block of everything. Our hair, our nails, skin, everything is made up of protein. All our muscles, मतलब muscles body में होती है ना, bones के ऊपर अगर muscle नहीं होगी तो you are a skeleton. That's what you are, right? So muscles are really important for doing everything, for giving support to bones, everything. They are made of protein. They are the building block. Okay. Proteins have different levels of amino acids. वो सब में नहीं जाएंगे. Then the third nutrient is fat. Fat is so important. हमारा पूरा brain fat से चलता है. Okay, brain activities run with fat. Hormones, they are run by fat. Hormones are so important in insulin and testosterone. Everything is so important in men and women. In women, I feel they are more important. Just how I see it, how my perspective is. मैंने ऐसे बहुत cases पढ़े हैं, and I've even heard of some people who stopped eating fats completely and they lost their periods. They lost their menstruation cycle, which is really bad, like not healthy. So yeah, fats are crucial, and it's recommended by RDA to have at least 30% of your daily diet as fats, and you should have
0.8 grams per kg of your body weight in proteins, which means जैसे अगर आपका वजन 100 kgs है तो उसका 0.8 would be 80 grams of protein is recommended for your body. Okay, just as a basic nutrition, ना कि आपको weight loss exercise किसी चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ आपकी basic functioning के लिए आपको 80 grams ज़रूरत है, 0.8 grams of your per kg of your body weight. अगर आप थोड़ा और एक्सरसाइज करने स्टार्ट कर देते हैं, आप 1 ग्राम पे जा सकते हैं, 1.2 पे जा सकते हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं, इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स. बट 0.8 इज अ बेसिक लेवल जो होना ही चाहिए. एंड यू नो एज यू exercise more, you need more protein. जैसे athletes go up to 2 grams per kg of their body weight. Rest of your daily intake can be filled up with carbohydrates. ठीक है? Yeah, so that's about all the macronutrients. How to calculate your BMR? Everyone has a different BMR. It's calculated based on your weight, your age, your like level of how you have lost weight or gained weight in the past. But there are many tools online where you can calculate it. So ये आपका होमवर्क है इस वीक का, आपको ये करना ही करना है. I will check with you. Yes, I will. Find tools online, either just Google it or I will link few links below. You can use apps like Fitter or MyFitnessPal. These are the ones I have used. I have not used others, but there are many others. उसमें आप अपनी डिटेल्स डालेंगे तो आपको वो एक बेसिक मेटाबॉलिक रेट आपको बताएगा. आपको वो TEE भी बताएंगे बेस्ड ऑन हाउ एक्टिव यू आर. दे विल आस्क यू अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल है आपका कम्प्लीटली, या फिर आप 1 to 3 टाइम्स थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, या आप 3 to 5 टाइम्स करते हैं, ऐसे आप उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, वो आपको बताएंगे. राइट, इट्स फ्री. देयर आर फ्री टूल्स ऑनलाइन. जस्ट यूज दैट. एंड बिफोर द नेक्स्ट वीडियो यू हैव टू नो योर BMR and TEE. Okay, I also just want to mention some points, like calories is a very relative term. Okay, so if I run for an hour and my husband runs for an hour, we both will not burn the same calories. Okay, why? Just like, how is it possible? You know, time same hai, distance same hai. Think of it like this. अगर आप मैं अगर मैं एक ओवरवेट इंसान हूँ जिसने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, ठीक है, मेरे को अगर आप आधा घंटा भागने के लिए कहते हैं, मुझे बहुत मुश्किल होगी. लाइक यू नो इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर मी. आप यू नो लिटरली मतलब कष्ट होगा मेरी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे. इट विल यू नो बी रेजिस्टेंस. माई बॉडी विल बी रेजिस्टिंग दैट एक्सरसाइज. ओके, अगर आप मुझे 10 उठक बैठक करने को कहते हैं, पुशअप्स करने को कहते हैं, स्क्वाट्स, एनीथिंग, इट विल बी रियली हार्ड फॉर मी. माई बॉडी विल स्ट्रगल टू डू दैट. ओके, इट विल need to use a lot of energy to do that because I've never done it before, plus my weight is heavy, right? You know, अगर मेरा बहुत वेट है, मेरे बॉडी को वो वेट को ऊपर नीचे करने में बहुत मेहनत लगेगी, right? As compared to साथ में अगर मेरे एक फिट कोई इंसान है जो साथ में मेरे ये सेम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जो ये रोज़ करते हैं, उनके लिए ये रोज़ की बात है, तो भी कैलोरीज बर्न होंगी बट कम होंगी. Right, you know, as compared to what my body is burning. ठीक है, so this is a very relative concept. Never you know compare it with your friends. You know they burn this much. That's why even the trackers like our watches, smart watches, Fitbit, Apple Watch, they are not precise. Okay, you can take them as a approximate figure, as a point of reference, but they are not precise. Okay, there cannot be a precise measurement of your exact calories. There are heart monitors and all which you probably are not using. Okay, yeah, so that's one point. And this is why based on your journey your BMR changes. Okay, how your body uses energy, it changes. ठीक है, जैसे कि अगर मैं 5 साल पहले वाली पूर्वा अगर आधा घंटा एक्सरसाइज करती थी, उसमें बहुत कैलोरीज बर्न होती होंगी,
जबकि मैं आज अगर वो ही सेम एक्सरसाइज करूँ तो बहुत काफ़ी कम कैलोरीज बर्न होंगी, बिकॉज मुझे अब वो आदत है, प्लस मेरा वेट अब कम हो गया है। तो अब मेरी बॉडी को उतनी डिफिकल्टी नहीं होती वो सेम एक्सरसाइज करने में, वो ही स्क्वाट करने में। पहले अगर मेरी बॉडी 20 kg एक्स्ट्रा ऊपर नीचे कर रही थी, अब कम करना पड़ रहा है, तो कम एनर्जी यूज होगी, राइट? सो दैट्स वाई आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट keeps on changing based on age, based on even age, right? अब बड़ों को ज़्यादा टफ लगता है थोड़ी सी एक्सरसाइज करना, चलना भी, तो उनकी बॉडी ज़्यादा बर्न करती है। That's why when you start on a journey as an overweight person, when it's very new, when you're exercising for the first time, you will lose weight fast, you will be happy, but later you might start not losing weight as fast, right? It's natural, as what we discussed now. So that's why things change, you have to adapt to them. Don't think that अब तो I'm doing the same exercises, I'm not losing weight, because आपको अब सेम चीज़ें नहीं करनी है, आपको खाना एडजस्ट करना है, आपको एक्सरसाइज एडजस्ट करनी है based on your journey. Again, these are deep topics, we will discuss them sometime later in detail. If you have questions, definitely text me, message me, put in the comments. Yeah, I think that's about it. Next video will be on another conceptual video. उसके बाद we will do a how to DIY video where we will discuss, I will show you exactly the nitty gritty of how I calculate the calories practically in my home, in my kitchen, how you can calculate it and fix it according to your needs and requirements. जो खाना है खाओ, starve मत करो यार, मतलब don't eat less. Eating less is more harmful than eating more. Trust me, it's very harmful. It can ruin your body's metabolism for life, you know. वो उससे बाहर आना बहुत tough है. It's tougher than like losing weight right now by eating more, you know. Honestly यार, ऐसे सोचो कि मतलब जो हम खाना खा रहे हैं उसी से हम अलाइव हैं। मतलब मैं बातें कर रही हूँ आप सबके साथ, मैं यू नो कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ विच आई लव डूइंग। हाउ एम आई एबल टू डू दिस? बिकॉज आई एम ईटिंग फूड टू नरिश दिस बॉडी, राइट? मतलब मैं, आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कैसे जिंदा हैं आप? बिकॉज आप खाना दे रहे हैं अपनी बॉडी को। खाने से डरो मत यार। आई हैव सीन सो मेनी पीपल नाउ डेज ऑयल से डरते हैं, एग योक से डरते हैं, चावल नहीं खाने, डर लगता है ये हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। डोंट डू दैट, यू नो। ट्रीट फूड एज समथिंग गुड. इट इज़ गुड, इट्स लव, इट्स कीपिंग यू अलाइव. Don't build a fearful relationship with your food. Build a happy relation. Treat it as something amazing that's giving you this energy to live every day. Okay, and learn what you need, what your body needs, and how we can give it the best nutrition possible. Okay. That's all I had to say today. There was a lot. I know मैं थोड़ा mixed up हो जाती हूँ अपने thoughts में बोलते. I hope you all understood everything, and if you have questions, do let me know. I'll answer everything in the comments. Also, homework नहीं भूलना है. Don't forget your homework. BMR and TE calculate करके रखना है. If it's wrong, it's okay. We'll deal with it. We'll discuss how to solve it, but calculate. Okay? And once you've calculated, message me. Okay? Bye bye. And eat good food, enjoy.